welcome dear students in this NEET rank booster number 3. So today we are going to discuss the two questions which are from the organic chemistry. So they are actually the estimation of nitrogen. How to estimate nitrogen in an organic compound. So we are having two methods for that. One is the Duma's method, another is the Kjeldahl's method. So let's see the first question which is on your screen. That is, we have to estimate nitrogen by which method? That is the Duma's method. इससे हम कैसे estimate करते हैं nitrogen? You have to simply, first of all, remember that Duma's method is very important. We can estimate nitrogen in any organic compound, whether it's aliphatic or aromatic, whether it is cyclic or acyclic, whether nitrogen is in the form of nitro group, azo group, it is inside the ring like pyridine, pyrrole, quinoline, etc. We can estimate nitrogen. So this is very important, Duma's method. So what you have to remember? You have to remember the formula. One is the ideal gas equation. That is PV is equal to nRT. So P, pressure, V is the volume, and you know the number of moles, R is the gas constant, T is the temperature. So how to calculate N, number of moles, that's PV upon RT. So then when you calculate the number of moles, then you have to multiply it with the molar mass of the nitrogen, that's 28, N2, molar mass 28, upon X. X is the amount of organic substance taken, that is the mass of substance in grams. जैसे ये हमें दिया गया है, X is 0.25 gram, which is given in the question. So percentage निकालने के लिए into 100. So what we are given, X mass is given, V is the volume of the nitrogen collected, that is 40 ml. T is the temperature given in Kelvin, 300 Kelvin. Now this is the pressure of gas, right? But this gas, remember that it is collected above water. So definitely there are water vapors. There will be also the vapor pressure of the water vapors. So we have to subtract the vapor pressure of the water vapors. तो वो हम कैसे करते हैं? We know from Dalton's law of partial pressure. One of the application of Dalton's law of partial pressure is that whenever we have to calculate the pressure of dry gas, pressure of dry gas, it's always equal to total pressure. PT से मैं represent करूँगा total pressure minus aqueous tension. What is aqueous tension? That is the pressure of water vapors, partial pressure of water vapors. So यहाँ पे हमें निकालना है this P pressure. तो वो कैसे हम निकालेंगे? That is the pressure of the dry gas. So that will be equal to total pressure that's given 725 mmHg minus क्या करेंगे? Aqueous tension that is 25 mmHg. So it will come out to be 700 mmHg. So right. Now we are having the P. We are also having the V, that's 40 ml. T, we are having 30 Kelvin. Now we are having this R. What is this R? It's the universal gas constant. So you know its values. R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. ये इसका एक value है. But we can also have it as 0.082 liter atmosphere per Kelvin per mole. इसका दूसरा value है ना, in different units. तीसरा मैं इसमें लिख सकता है, it is 0.083. अब ये हम लिखेंगे, ये एटमॉस्फेयर में था, यहाँ पे बार लीटर पर केल्विन पर मोल. अगर हम लीटर नहीं लिखेंगे तो डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, पर डेसीमीटर क्यूब. So यहाँ पे it is also equal to 2 calories per Kelvin per mole. तो अब इतने values मैंने इसके बता दिए in different units हैं, universal gas constant. यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? We will use this one. That is this one, liter atmosphere per Kelvin per mole. This one unit, that is 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. पर उससे पहले हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन फिर करना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये ml में आपको वॉल्यूम दिया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये लीटर है. सो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे कर सकते हैं? 40/1000.
तो अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज वी नो दैट 1 liter that is 10 raised power 3 ml milliliters, or we can say 1 ml that's equal to 10 raised power minus 3 liter, है ना. ये यूनिट कन्वर्शन आप कर सकते हैं. अब यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में ऑलरेडी, ये तो ठीक है. नाउ वी आर हैविंग द प्रेशर दैट्स इन mmHg, बट यहाँ पे एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर इसको भी एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे. सो ये आपको प्रेशर दिया गया है 700 mmHg, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू एटमॉस्फेयर. सो दैट 700, इसको डिवाइड करेंगे 760 से, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटमॉस्फेयर. व्हाई इट इज सो? बिकॉज वी नो दैट 1 atmospheric pressure is how much? That is 760 mmHg. तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे सभी वैल्यूज है. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड यू कैन गेट द आंसर. सो लेट्स सी हियर. हमारे पास पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट n. n इज द नंबर ऑफ मोल्स. तो n किसके बराबर है? PV अपॉन RT. सो व्हाट इज योर प्रेशर? प्रेशर इज योर 700. इसको डिवाइड किससे करेंगे? 760 से इनटू V. V इज द वॉल्यूम, दैट इज 40 डिवाइड बाय 1000. Then whole divided by R and T. R is your which one? 0.0821 into T. T is given, that is 300 Kelvin. क्योंकि ये Kelvin में ही, इसको ऐसे ही रहने देना. So unit conversion is very important. So यहाँ पे आपको क्या निकल के आएगा? Number of moles. When you will solve this, you will get the number of moles, and then you have to calculate what? Percentage of nitrogen actually. तो कैसे निकालेंगे? That is n, जो यहां से आपको निकलेगा, into molar mass, that is nitrogen 28 divide by mass of the organic compound, that is given 0.25 gram into 100. So by this you will get the, when you will solve this, यहां से n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, you will finally get the answer, that is 16.75. This will be the percentage of nitrogen. So the correct option of the given question will be option number C. So hope that you have understood. So in Duma's method, you have simply first of all calculate the number of moles n by using the ideal gas equation, but unit conversions are important, जो मैंने यहाँ पे बता दी. आपको जो प्रेशर वहां पे दिया गया होता है, उसको वो तो टोटल प्रेशर होता है, दैट इज एक्चुअली द प्रेशर ऑफ गैस अबव द वाटर. उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है एक्वस टेंशन, तभी तो आप निकाल सकते हैं प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, है ना. प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, दैट इज टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, जो मैंने यहाँ पे बता दिया. उसके बाद व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट दिस, और आपको ये कन्वर्ट करना होता है प्रेशर जो mmHg में दिया गया है इनटू एटमॉस्फेयर, एंड जो वॉल्यूम ml में दिया गया होगा उसको इनटू लीटर. So then percentage of nitrogen is simply number of moles into molar mass of nitrogen 28 upon mass of this substance, that is here given as 0.25 gram. Now let's see another question. That's question number 2 from the same estimation of nitrogen, that is calculation of estimation of nitrogen by Jellal's method. Now इस method में हम कैसे निकालते हैं percentage of nitrogen? Directly with this formula. That is percentage of nitrogen, it's equal to 1.4 into n. n is the normality of the acid. यहाँ पे हम acid use करते हैं sulfuric acid in this Jellal's method, and the volume of the acid taken. Volume हमें acid का कितना use हुआ, कितना volume हमने लिया, and x is the same, that is the mass of the organic compound in grams. अब और एक बात, किसी वक्त आपको sulfuric acid की normality नहीं दी गई होगी, it is the normality here, है ना, normality of the acid, molarity दी गई होगी. तो आपको याद रखना है नॉर्मलिटी ऑफ एसिड किसके बराबर होता है? इट इज मोलरिटी इनटू बेसिसिटी. इट इज मोलरिटी इनटू बेसिसिटी. तो आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वहां पे हमारे पास दिया गया है मोलरिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, दैट्स 1. ये सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी है. सो हम कैसे फिर निकालेंगे नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, दैट्स 1 इनटू बेसिसिटी. बेसिसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की कितने होते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, it is H2SO4, so it can
give 2 protons है ना, number of replaceable H positive ions, that is it is basis T, so that's 2, so 2 into 1 that's 2. तो यहाँ पे नॉर्मलिटी जो है that's 2. हमें दिया गया था क्वेश्चन में मोलरिटी, पर हमें क्या निकालनी है, नॉर्मलिटी, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे नॉर्मलिटी. वॉल्यूम आपको दिया गया है 10 ml, X is given 0.75 gram. So when you will substitute the values, so कैसे निकालेंगे यहाँ पे percentage of nitrogen, so it will be equal to 1.4 into normality, that's 2, into volume, that's 10, upon X is given the mass of the substance, that is 0.75 gram. So when you will solve this, you will get the percentage of nitrogen, and it nearly, when you will solve, it will come out to be nearly 37.33. So that is the option number first is the correct. So ये दो formulas आपको यहाँ पे importantly याद रखने हैं. The two methods we are having, one is Duma's, another is Kjeldahl's method, but there is a limitation. Kjeldahl's method cannot be used. So इसकी limitation आपको याद रखनी है. Limitation इसकी ये है that this method cannot be used for aromatic nitrogenous compounds. जैसे हमारे पास है pyrrole है, जैसे हमारे पास है pyridine, जैसे हमारे पास है quinoline, इनमें नाइट्रोजन जो एटम है that is inside the ring, उनके लिए ये applicable नहीं है. जैसे आप दिखा सकते हैं यहाँ पे pyrrole हमारे पास है just like this. नाइट्रोजन जो है आपके पास that is inside the ring. Similarly pyridine में आप देख रहे हैं, pyridine में आप देख रहे हो नाइट्रोजन एटम जो है that's inside the ring. इनके लिए Kjeldahl's method जो है it is not applicable. यहाँ पे हम नाइट्रोजन estimate नहीं कर सकते हैं with this Kjeldahl's method. Another limitation of this Kjeldahl's method is that it cannot be applied for those compounds which contain nitro group in them, NO2 group. नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और which contain diazo group, जैसे बेंजीन, डायazonium क्लोराइड, इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. So hope that you have understood this rank booster number 3. Wish you all the very best. Thank you for watching.